the more you want to enjoy your music, the more you have to suffer for that. Because जितना भी जरिया पैसे का है म्यूज़िक में is all through commercial endeavors, and उसमें कहीं ना कहीं आपको अपनी सोल बेचनी पड़ती है, which is the fact. आप एक रात के लिए उस सोल को बेचो या पूरी लाइफ के लिए, that's up to you. Hello guys, welcome to Expertribe. Don't we all have a childhood dream of becoming a cricketer, an actor, or an astronaut, or anything? But how many of us actually go behind that dream? Today we are in conversation with Mr. Abhay Sharma, who dared to chase his childhood dream of becoming a musician and has achieved great heights by doing the same. So now let's dive in straight to his incredible journey. I know you're very passionate about your art. Okay? So I would like to ask you, right, is that in a country as culturally rich as ours, why do you think a career in arts is always considered impractical or, a tough choice? Especially, when we consume art so much. That is what I really, really want to ask you. There are a lot of views and there are a lot of kind of ways of approaching this question. First of all, you said that our country is culturally rich. So we also have to understand that there are so many cultures within the country, within the culture. This is, for example, there is no one Indian culture as such. And because there are so many languages, there are so many different states. And 28 थी, फिर 29 हुई. I think अभी भी 29 ही है, as far as I know. And there are different places. There's North has a different culture, South has a different culture. And the only thing that I think binds us together eventually becomes something like cricket, sports हो गया जैसे, and Bollywood हो गया जैसे, films. But in other spheres of our life, for example, when you're born and brought up in South India, they push you to do classical music or Carnatic music, which they do. And similarly, when you're born in kind of Calcutta or eastern part of the world, they put you onto music as well. North में भी ये culture था, but since I feel that there was more refugee movement, a lot of people came from Pakistan, and historically also, we kind of were a little more scared of getting into cultural aspects of things, which is what my father tells me. His father told him कि हम बड़ी मुश्किलों से तुम्हें पैदा करके यहाँ तक लाए हैं, और ये चीज़ तूने भी सुनी होगी कि नॉर्थ में तो बहुत है, एटलीस्ट इन आवर कल्चर देयर इज ऑलमोस्ट ऑलवेज अ फियर ऑफ नॉट डूइंग समथिंग दैट्स अगेंस्ट द नॉर्म. एंड उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए ना, what we eventually start doing is we eventually start looking at the pop culture. And the pop culture in India for the longest has been Bollywood and music में. The problem here is that there has never been an independent industry. बाकी शोबों में भी था ये, बाकी professions में भी था, I think it. But at least in music, there's never been like a quote unquote different industry which is like in parity with Bollywood or Indian film music or some other regional film music. Till about 90s. And 90s के बाद ही कुछ बैंड्स ने ऐसी हिम्मत जुटाई कि अपने म्यूज़िक से भी पैसा उन्होंने कमाना शुरू किया. एंड कल्चर डेवलप्स only and only when there is some sort of financial benefit out of it. But the Indian culture has always been classical music and down south Carnatic music related, जो भी मैं बोल रहा हूँ. Indian जो historical culture है, मैं बजाता हूँ वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट, तो उस चीज़ को सेटअप करने के लिए कभी कोई रहा नहीं. जैसे फॉर एग्जांपल अब व्हेन इंडिया विन्स द वर्ल्ड कप इन 2011, आई मीन धोनी वन द वर्ल्ड कप फॉर अस, बट उससे पहले देयर वाज अ कपिल देव हु हैड डन इट. ठीक है, कपिल देव से पहले देयर वाज सुनील गावस्कर ऑलरेडी प्लेइंग, एंड देन देयर वाज टाइगर पटौदी एंड बिशन सिंह बेदी. सो देयर वाज अ कल्चरल कॉन्टेक्स्ट. ऐसा था कि पहले हम 10 थे, फिर हम 20 हुए, फिर हम 50 हुए, फिर हम 100 हुए. And there's almost a chronological order you can trace कि ये चीज़ कहाँ से आई है. वो वेस्टर्न म्यूज़िक इंडिया में ट्रेस नहीं किया जा सकता.
वो होटल्स में बचता था till about from 50s till 60s to 70s, but it never took shape and form like it did in the West. तो उस लिहाज से it was never a place where you could earn money till about the 90s, late 90s, early 2000s. उससे पहले जितने भी लोग म्यूज़िक कर रहे थे, either they were extremely rich और extremely poor. जिन लोगों को पैसे की कोई टेंशन नहीं है या जिनको लाइफ में ही कोई टेंशन नहीं है, जो यू नो द वेरी पीपल हु आर एब्सोल्युटली मार्जिनलाइज्ड, दे डोंट गिव टू हूट्स अबाउट व्हाट देयर लाइफ इज गोइंग टू बी. दे गिव देयर 100% to music. Similarly, people who are extremely rich, they were doing music for their own self. And the middle class never really decided up until maybe mid 2000s, late 2010, अभी 10-12 साल पहले ही ऐसा हुआ है कि क्लब्स ऑल ओवर द कंट्री शुरू हुए. पहले क्लब्स सिर्फ दिल्ली, बैंगलोर, बॉम्बे, कैलकाटा, बड़ा डिफरेंट मेट्रोपॉलिटन्स में भी और डिफरेंट सिटी, सेकंड एंड थर्ड टियर सिटीज़ में भी खुल रहे हैं. तो इट इज़ ओनली रिसेंटली दैट द मिडिल क्लास हैज़ एक्चुअली कम अबाउट एंड सेड कि चलो ठीक है यार, अब ना म्यूज़िक से पैसे भी कमाए जा सकते हैं, और सिर्फ सिंगिंग से नहीं, म्यूज़िक लिख के बजा के भी. तो इसीलिए इट वॉज नेवर सीन बिकॉज द लाइक द मिडिल क्लास नेवर वोक अप टू द आइडिया ऑफ डूइंग इट. इट्स अ रीसेंट अकरेंस. तो ये सीन है बस. अब उसके लिए टॉर्च बेरर्स ढूंढ रहे हैं हम लोग म्यूज़िक सीन में, वो मिल नहीं रहे हैं, बट जो भी हैं वो इट्स अ वेरी कंफ्यूज सॉर्ट ऑफ अ सिचुएशन. आई टेल यू मोर अबाउट. पूछो सवाल पूछो. ट्रिकी सिचुएशन है आर्ट्स की हमारी कंट्री में. You talked about the saxophone a bit. So it's not a very popular instrument that we've seen like guitar or other instruments. So I would like you to briefly talk about it. That what is its origin? What are the famous players? How did you, as you know, how do you give it a personal touch? And so basically, saxophone comes from this. It's a Belgian instrument. एंड एडोल्फ सैक्स करके एक बंदे ने इसको आई थिंक 18th और 19th सेंचुरी का ही इंस्ट्रूमेंट, 17th प्रॉबेबली, आई डोंट रियली नो, 18th या 19th का ही है सेंचुरी का. एंड फ्रॉम यूरोप इट वाज टेकन टू अमेरिका, विच इवेंचुअली बिकेम इट्स होम. इट वाज यूज्ड इन ब्रास सेक्शंस and bands, brass bands, and from that it led to a point where it was being used in jazz a lot, which is jazz is nothing but another post late 19th and early 20th century music that originated in New Orleans in America. And वहाँ पर इसको बहुत यूज़ किया saxophone को, and that became the syllabus of this instrument, basically the cultural syllabus. जैसे जो R.D. शर्मा हो गई, तो वो R.D. शर्मा हो गई jazz saxophone का, ठीक है. And there is a western classical music context to it as well, which is very European, but I am more in favor of the American style of it. And वहाँ पर बहुत अच्छे saxophone players आए, जैसे चार्ली पार्कर करके एक sax player हैं, सॉनी रॉलिंस करके एक sax player हैं, जॉन कोल्ट्रेन बहुत famous है world over, and बहुत there are countless dude, there क्रिस पॉटर करके एक हैं, अब there is माइकल ब्रेकर हैं, मतलब ये सारे बाहर ही हैं. इंडिया में it became popular in the Hindi film music. There was a saxophone player called Manohari Singh basically, and he used to play for Pancham Da and O.P. Nayyar and S.T. Burman. तो उनके पुराने फिल्मों में बहुत it became extremely popular, and it was popular for the longest till about 90s. Then 2000 में एक dip आया, and late 2000s it again with a lot of Imran Hashmi songs. You know, somehow Bollywood thought that saxophone is more romantic or some other shit. So, and Imran Hashmi is whatever. I don't even want to discuss him. But yeah, उसका गाना आया था, तुम मिले तो रा 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 रा, तो उसमें there was a saxophone intro. Then yeah, it's used sparingly now. बहुत कम use होता है in Bollywood. But yeah, I mean, old Bollywood music on the saxophone sounds fantastic, which is why I'm making all of the money that I do. And yeah, so these are some of the saxophone players. And my personal touch is that I know both the worlds. कि कब switch करना है. I know when to switch to the western side of things, and I know when to switch to the Indian side of things. जैसे, I mean, for example, if I'm playing an Indian tune,
लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो. So these are little nuances that Indians add, but when a Western playing will be playing it, he'll add a very different nuance. Da 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 da. It Western na, there's more straight. It's more straight as an arrow. They work more on their chords. They work more on their harmony, which they call the chords. Music में जो chords होती हैं, Indians work more on the melody. I know both the worlds. At least, I mean, I think I do, and I'm learning more about it. I'm learning more rags, more Indian tunes, more Western tunes, and I kind of know when to say what, which is why I'm hired also, which is why Shankar Hasan Lawyer hire me, which is why Adnan Sami hires me, which is why all of these other Bombay acts also hire me. So yeah, that's my kind of, I mean, I know Charlie Parker and I know Manohari Singh. So वो दोनों वर्ल्ड्स कंबाइन कैसे करने हैं, अलग कैसे रखने हैं, वो आता है मुझे. That is Abhay's USP, knowing both It the is. worlds. It is, yeah, it is, because a lot of saxophone players in India, they just know the western side of it, because probably उन्होंने church में सीखा था, या उन saxophone actually is a very, in India only the Goans and the Nepali community played saxophone quite a bit. ये दोनों community जब इंडिया आए, तो they became more, because music ना for the longest was considered like a sin in our culture, in our religion as well. Religion वैसे में तो नहीं है, but in our culture, जैसे कभी म्यूजिक बजाया तो अरे मिरासियों वाला काम है या कोई और, it was looked down upon. So the upper class never really took to music. It was always the lower caste people. I mean, unfortunate है, but that's the truth. That's why you see a lot of non-Hindu. I don't want to make it more political, but there are more non-Hindu artists, because art, in the sense, Hindus, in like for the longest, have primarily been people who were the chartered accountants in companies, or who were more business oriented, more education oriented, not pretty much into arts. That's why you have all of the Urdu poets are primarily from a different community, like from the Muslim community, from that world, because that was more their culture in that. So saxophone became a very Goan, Christian, very Nepali thing to do. So I mean, with that thing in mind, I'm quite an anomaly, because I'm Punjabi and I'm from North India. So it's very, I mean, yeah, thanks to my father. But yeah, it's primarily cultural more than religious. And you didn't have a luckily abba nahi manenge, ammi nahi manengi, arts pursue karne nahi denge moment. They actually got you into this, so that was lucky for you. Bilkul lucky. So that problem, the financial problem, became a sort of how do I say that, like a boon eventually. And so listening to your story, the young viewers must be feeling that you're so established, you work with so many famous people, like it's a dream come true. But I want to really tell them that what is it like to be a full-time artist, amidst the Freddie Mercury story, and what is that remains about the hidden struggle, somebody who just is pursuing and is a full-time artist. Yeah, I think there's a lot of wrong sort of news about music that has been circulated for the last 25-30 years. एक ना वो बोलते हैं that rock and roll, sex, drugs and rock and roll बोलते हैं, ठीक है? And that life is not what it is eventually, because that is just one part of the community. There is a rock music community that was really popular in the 60s, 70s and 80s. 90s में rock खत्म हो गया basically all over the world, and it turned into this thing called grunge, जहाँ Kurt Cobain आ गया, Nirvana and all of these other things, but that's not what we're talking. Basically in India there was never a movement of music. जैसे for example अब अमेरिका में जो movement थी music की, it happened during the 60s when the young kids took to music. वो उन्होंने क्यों किया था? Because they
there was a movement called the counter culture movement. उस movement का नाम counter culture था. Point क्या था कि हम जो अमेरिकन कल्चर है, किसी भी कंट्री में जाके इन्वेड कर देना, किसी भी कंट्री में कम्युनिज्म के खिलाफ लड़ाई शुरू कर देना, ये सब बंद करो. तो then became guys like Bob Dylan came about, then rock musicians came about. Rock was about, revolution. Jimi Hendrix and all these other people, they were revolutionizing. Even the songs that they wrote were very Floyd हो गया, Welcome to the Machine, और वो बता रहा है कि how capitalism is going to kill you eventually, all of that other stuff basically. I'm not pro communism or capitalism. I think both of these are, very detailed analysis वाली बातें. But this is what the Western world did. India में ना ये movement कभी आई नहीं. India में rock was primarily, how do I say this? It was only being done by the really elite people of this country from the 70s, 80s. I know about this because I've hung around all of these people. So the likes of Ehsaan Nurani and Loy Mendoza from S. Shankar Ehsaan Loy, they tell me all of these stories. And it was Western instruments were only available. वो available ही नहीं थे. तो obviously जब ट्रांजिस्टर ही नहीं है या म्यूज़िक सुनने का कोई सामग्री ही नहीं है, तो वो तो सिर्फ जो रईस व्यक्ति होगा वही कर पाएगा ना. Only the rich would be able to do it. And again, going back to the point, 90s में bands like Indian Ocean, bands like Agni करके एक band है, और Euphoria आ गया late 90s में, and Mairi वगैरह, it became extremely famous. And हिंदी पॉप वाला जो कल्चर शुरू हुआ, वहाँ कुछ जैसे upper middle class kids came about and they're like, you know what, let's start a movement. तो उस चीज़ की movements शुरू हुई basically. But the life of a musician was still pretty much fucked up in that sense, because at least I'm talking about art from a musician's point of view. It was very bad if I were to be honest, because what happened is that regular shows नहीं थे. Regular shows और money आपको wedding और corporate shows से ही आते हैं, जहाँ पर आपको बिल्कुल ही उल्टा व्यक्ति बन के जाना होता है. आप कॉलर ऊपर नहीं कर सकते हो. You can't talk rudely there. There's a certain way of behavior there, which the Indian musicians did not know for the longest. And it is only the last 15 years that Indian musicians have figured out that अगर पैसा कमाना है तो वो मिलेगा corporate और wedding या commercial music से, which is opposite to why you pick up your instrument. अब यार मैंने instrument अपना उठाया था enjoy करने के लिए, right? Obviously पैसे भी कमाने थे, but the more you want to enjoy your music, the more you have to suffer for that, because जितना भी ज़रिया पैसे का है म्यूज़िक में is all through commercial endeavors, and उसमें कहीं ना कहीं आपको अपनी सोल बेचनी पड़ती है, which is the fact. आप एक रात के लिए उस सोल को बेचो या पूरी लाइफ के लिए, that's up to you. From, like, for example, Vishal Dadlani, right? He started as a rock vocalist and, very angry, very angsty. He did ads, he did some films, and then eventually it led to a point where now he's doing Baby Ko Bass Pasand Hai. Right? So you see the difference here from, being anti-establishment and rock and all that to Baby Ko Bass Pasand Hai with Salman Khan. So now a young musician must be very confused. इसमें से विशाल डडलानी कौन है? ये प्रॉब्लम होती है यंग म्यूजिशियंस के साथ. एंड ये ना, गोइंग बैक टू द सेक्स, ड्रग्स एंड रॉक एंड रोल वाली बात, अब हमने फ्रेडी मर्क्यूरी की स्टोरी सुनी कि फ्रेडी मर्क्यूरी कुड बी द वे ही वांटेड टू बी. तो इंडियन म्यूजिशियंस को लगता है यार हम भी थोड़ा एटीट्यूड दिखाएंगे लोगों को, और हम भी कुछ हैं भाई, आई एम ऑल्सो लाइक समथिंग. बट वो चलता नहीं है, बिकॉज यू आर प्लेइंग, ऑल द मनी दैट यू आर गेटिंग इज फ्रॉम कॉर्पोरेट गिग्स, जहाँ पर you have to cooperate. You cannot be like, down with the government and cooperate. No one gives a fuck. They're paying you to do a certain, and that is what confuses. I have seen so many young musicians, way more talented than I will ever be, come into the independent music scene and be like, bro, this is how I am and this is how I'm going to be. ठीक है, then you suffer, and then you suffer the consequences. And thus, the unfortunate truth is, the independent music scene in India could never take shape,
बिकॉज 4-5 साल से ज़्यादा बंदे म्यूज़िक नहीं करते, वो या तो कोई जॉब करने लग जाते हैं, बिकॉज दे वॉन्ट टू बी द वे दे आर, उनको अपना ही म्यूज़िक बजाना है, राइट? वो कोई सुनना नहीं चाहता क्योंकि उसका कोई कल्चरल कॉन्टेक्स्ट नहीं है। अब मेरे साथ प्रॉब्लम या सोल्यूशन क्या है, मेरे को अभी फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज मेरे को कॉर्पोरेट एंड कमर्शियल शो से पैसा आ रहा है। मैं प्राइमरीली म्यूज़िक एक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट बनाने के लिए कर रहा हूँ कि एटलीस्ट एक चीज़ तो हो 10 साल बाद कि अरे रिविज़िट प्रोजेक्ट था, अगर उसमें बन गया, इफ़ इट बिकम्स अ थिंग वेयर पीपल आर लाइक मैन आई वांट रिविज़िट ओनली, जो कि बहुत सारे चांसेस हैं उसके। ऐसा नहीं है कि इंडिया में ऑडियंस नहीं है, बट इंडिया में माउथ पब्लिसिटी ज़्यादा मैटर करती है। अब तू अपने किसी दोस्त को बोलेगी ना, ओ यार चेक आउट दिस बैंड, इट विल बी वे मोर इफेक्टिव देन समवन एल्स, लाइक देन हिम गोइंग आउट एंड रिसर्चिंग अबाउट दिस। सो ये एक कॉन्ड्रम होता है कि शुड आई बी द वे आई वांट टू बी, शुड आई बी अ रॉक स्टार और शुड आई बी समवन हु इज स्मार्ट प्रैक्टिकल, एंड उसमें बच्चे फंस जाते हैं। बिकॉज इमेजिन नाउ when you were 18-19, you went to a college, right? Did you do masters में क्या किया तूने? मैंने IIT रुड़की से केमिस्ट्री में मास्टर्स करी। There were people around you who kept teaching you how to behave for your age. अगर तुझे नहीं भी पता था, at 18 you came from some place and then you went to some place and then you saw people around you and those 150-200 people culturally changed you. अगर तुझे एक चीज़ के बारे में नहीं पता था तो तुझे उन्होंने सिखाई और तू अपना कल्चर लेके गई। म्यूज़िक में क्या होता है, बाय द टाइम यू आर 20, 21, 22 एवरीवन चेंजेस, बिकॉज कॉलेज में सब रॉक स्टार्स होते हैं यार, कॉलेज में सब हीरो होते हैं। जैसी कॉलेज ख़त्म, हाँ भाई अब क्या करना है, दोस्त आपके चले जाते हैं बाहर, यू रिमेन अलोन, एंड व्हेन यू रिमेन अलोन अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट हैपेंस इज यू एंड अप पिकिंग ऑन द रॉन्ग हैबिट्स। बिकॉज म्यूज़िक सीन चलता कैसे है, म्यूज़िक happens at night, ठीक है? इट इज़ नॉट समथिंग दैट हैपन्स सुबह सुबह, बहुत रेयर होता है कि यू नो सुबह क्लासिकल म्यूज़िक के कॉन्सर्ट्स होते हैं। द वेस्टर्न म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स हैपन पोस्ट 7:30, 8, 9, कभी कभार 12 बजे शुरू हो रहे हैं वो शोज़, क्लब शोज़, गुड क्लब शोज़। सो नाउ देयर इज़ सो मच टाइम दैट यू हैव। सुबह तुम 10 बजे उठे हो या 9 बजे उठे हो या 12 बजे उठे हो, कितने बजे भी उठे हो, तुम्हारे को शाम को बजाना है और शो पे बजाना है जहाँ पे तुम्हें खाना पीना मिलेगा। तो तुम्हें लगता है तुम्हारे पास 8 घंटे, तुम क्या करोगे? हाउ डू यू प्लान? नो वन इज़ टीचिंग यू दिस। योर पेरेंट्स हैव अ वेरी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। उनकी 9 से 5 जॉब है, वो 5 बजे काम करके घर आ रहे हैं, तुम 5 बजे शो पे जा रहे हो। तुम देख रहे हो डिफरेंस। योर फादर एंड योर मदर कैन नॉट टीच यू दिस। एंड वहाँ पर जब तुम जाते हो, यू थिंक यूल गेट गुड कंपनी, यू थिंक यू डोंट। पीपल कम टू विजिट ऑल ऑफ दीज वेन्यूज टू हैव फन, एंड किसी की भी फन की डेफिनेशन कुछ भी हो सकती है। सो यू एंड अप पिकिंग हैबिट्स that are not friendly to you. Like if someone's smoking at a gig, dude, वो पहले 4 दिन से फ्रस्ट्रेटेड था और आज वो सुट्टा लगा रहा है एक शो पर। तेरे साथ वो सीन नहीं है, यू वॉन्ट टू लुक कूल इन फ्रंट ऑफ हिम, तो तू भी सुट्टा स्टार्ट कर देता है। बट उसको लिए वो सुट्टा हैज़ अ वेरी डिफरेंट मीनिंग। ही इज़ रिलीजिंग हिज टेंशन, you are faking it, and imagine that happening for years to you. You will end up picking up habits which are not true, which are not correct. That's why parents say no to music, because not the life of music, but the life of a musician sucks. It sucks more often than not, which is where the young musician, unfortunately, अब तुम ये अगर रेगुलरली हो रहा है, तुम्हें गलत आदतें पड़ गई हैं, तो तुम प्रैक्टिस भी नहीं करोगे। तो ये एक बहुत ही बड़ा एक साइकिल है ऑफ फिल्थ। ये मैं बोलता हूँ अपने दोस्तों को, डोंट गेट इनटू दीस साइकिल्स ऑफ फिल्थ। देयर इज़ नो कॉलेज, देयर इज़ नो म्यूजिक सीन, और देयर इज़ नो टीचर हियर जो तुम्हें गाइड करेगा। There is no structure basically, right? देयर इज़ नो स्ट्रक्चर, देयर इज़ नो वन टेलिंग यू दैट अच्छा ये सही नहीं है, ये सही है, ये सही नहीं है, तू देखो जो करना है तो कर। तो बच्चे वही करते हैं, एंड दैट इज़ वेयर लाइज द हार्ट ऑफ द इशू. It is not the audience. The problem of Indian music, independent Indian music, is not the audience. It is not your show programmers, or it is not the event industry. It is the musician first and foremost. Because वो अकेला है बेचारा, उसकी भी गलती नहीं है. उसको culturally there is nothing guiding him in the right direction. ये क्योंकि हमारे पास हीरोज़ नहीं है. मैं अगर देखूँ तो हम मेरे से ऊपर जितने भी म्यूजिशियंस हैं,
I mean, more often than not, either they're just working for money or they just don't give a fuck because they have the money. And middle class heroes हैं ही नहीं म्यूजिक में. You know, एक बच्चा जो मिडिल क्लास फैमिली से आया था एंड नाउ वो म्यूजिक कर रहा है. तो वो हैं कुछ एग्जाम्पल्स. बट या, आई मीन, इट्स नॉट ऑल सैड. I'm just saying you have to be very, very, very attentive and very practical in industry, as open and as friendly to wrong or unsavory habits. You have to be more attentive than a profession like yours. Because वहाँ एक सीधी डायरेक्शन है कि बेटा ये मास्टर्स, ये पोस्ट ग्रेड के बाद, अब मास्टर्स के बाद ये कर लो, फिर एक जॉब होगी जहाँ पर तुम्हारे साथ 20-25 लोग होंगे जिनका एक स्टिपुलेटेड टाइम होगा. अब यहाँ पर वो भी म्यूजिशियन है जो रात को परफॉर्म कर रहा है. अब वो भी म्यूजिशियन है जो सुबह क्लासिकल कॉन्सर्ट जा रहा है. वो भी म्यूजिशियन है जो सिर्फ 2 कॉर्ड्स बजा सकता है. वो भी म्यूजिशियन है जिसके सारे गाने पता हैं. तो अब सही चीज़ है क्या, ये डिसाइड नहीं हो पा रहा. बस वही एक बात है ना, जैसे मैं तुझे बताऊंगी, जब मैं भी IIT गई थी ना, there were people जो सुट्टा मार के और दारू पी के वो पड़े रहते हैं. ये ना एक बच्चे को बहुत अर्ली ऑन डिसाइड करना पड़ता है कि व्हाट पाथ दे वांट. और ये मैं अग्री करती हूँ कि आर्ट में मतलब कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, तो और ज्यादा गुमराह होने के देयर आर मोर पाथ्स टू इट. इट्स लाइक दैट. हाँ, तो अभी हमने जैसे हम तो गाने लिखते हैं वैसे यार. देयर आर so many songs that defend that life. 2 घुट पिला दे साकिया, बाकी मेरे पे रोड दे. ये सब चीज़ें बचपन से देख रहे हैं. I mean, we've normalized alcohol, and it's actually more worse than weed. I mean, scientifically as well. I mean, I'm just saying, but ये तो एक अलग ही टॉपिक है. But go on. इवन बॉलीवुड मूवीज में ऐसा दिखाया जाता है कि हार्ट ब्रेक हो जाएगा तब म्यूजिक दिल से आएगा, या फिर यू हैव टू बी एडिक्टेड टू सम एडिक्शंस तभी तुम आर्टिस्ट हो. एग्जैक्टली. ये एंड द प्रॉब्लम इज, जितने भी फिल्म मेकर्स हैं और प्रोड्यूसर्स हैं, उसमें से ज़्यादातर लोग ना, दे डोंट एक्सेप्ट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी. नाउ इफ आई वॉज डूइंग समथिंग विच वॉज बीइंग फॉलोड बाय मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल, I would be very careful what I say and what I write. Like, you see the downfall of Kangana Ranaut. Why has she suddenly become so crazy? Because she doesn't understand the responsibility that she has as an artist. उसको करोड़ों लोग जानते हैं. अभय शर्मा को 4000 लोग जानते हैं इंस्टाग्राम पे. मैं कुछ बोलूँगा, आफ्टर अ पॉइंट इट विल नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन. तो वो प्रॉब्लम बड़ी होती है. उनको सही बॉलीवुड में भी सही चीज़ें सही ढंग से बोलने का कल्चर ही नहीं है. It's almost like या तो बिल्कुल चुप रहो. All of the Amitabh Bachchan and the Shah Rukh Khan of the world, they will not speak about anything ever. या तो बहुत ज़्यादा बोलो, like the Nasiruddin Shahs and the Kangana Ranauts of the world. There is no balanced approach happening here. But वो तो that's a cultural problem everywhere almost. Like even in Hollywood or some other shit. वो culture है. Better culture हो तो artists के लिए भी it's a pathway for the youngsters. They can follow somebody. That would be a better. Absolutely. I'm pretty sure that the second part of Abhay's journey would have inspired you in some or the other way. If you want to watch more, find the link in the description below for the first part of his journey, and also watch all our other videos. And for more such content, stay tuned and don't forget to like, comment, share and subscribe.